Very good afternoon, all of you. So now, today's lecture will cover in a decision-making statement. Today's topic will discuss about that decision-making statement. In last lecture, we discussed about the operators. There are six different types of operators. Arithmetic is there, relational is there, logical, bitwise, miscellaneous, assignment operator is there. So there are total six operators. So operator are the soul of any programming language. So that means if you know operator, then you will get a very what we say a command on business logic. If you don't know about the operator, you cannot able to understand the another topics like decision making statement, loops, array structure, like that. That means if you know the operator, then you can able to learn decision making statements. Now, a decision-making statement requires that the programmer specify one or more condition to be evaluated or tested by the program. Majorly, decision-making statements are used to test the condition. Either we can test one condition, or if you want to check greater than one condition, then we can also do that. Or evaluating the one or more conditions, then we can also do that by using a decision-making statement. Before that, majorly we need to understand all the operators are being used in the decision making statement. For example, arithmetic operator, in that we will check uh, different types of operator. We will check relational operator in decision making statement. We'll check logical operator in decision making statement. We can also use uh, bitwise operator in decision making statement. That means, what does it mean? It means that we can use any operator in decision making statement. The major functioning of the major functioning of decision making operator or decision making condition is to test the condition. For example, here I will show you. I want to test two numbers. Here I have two numbers. The first number is 10 and the second number is 20. Now I want to evaluate or test a condition which is a smaller number, either 10 or either 20. Now we need to check. Whenever we check or whenever we evaluate the condition, we get the output either true, either false. We get the output either true, either false. That means here we get the condition, and in that condition, we get the output as true. And we all know that the meaning of true and meaning of false in the programming. We already discussed about that. True means 1 and false means 0. That means whenever we test these two conditions, whenever we test this condition, okay, whether the number is a smaller or whether the number is a bigger, we get only two outputs. Okay, either it is a true or either it is a false. We get only one output, either true or either false. So I will write the condition. So for that, here I will write a condition to find out the smaller number. So here I will write the condition using a relational operator. Assume that the name of variable is var1 that contains 10 value, and second one is a var2 that contains 20 value. So in that section I will write a condition var1 is smaller, that means less than symbol, than var2. So here is my condition. var1 is smaller than var2. So we get the output either true or either false. We get the output either true or false. Here we get only true output. What is the reason? Because we know that value 10 is always smaller than 20. Another conjunction we will write. See, just like that stuff, we need to understand, we need to follow that condition only. Okay, we need to evaluate that condition. See, here I will write var1 is greater than var2. Is it true or is it false? False. We all know that 10 is smaller than 20. That means this statement will get false.
First of all, we need to understand what does it mean, true or false कैसे होता है, and after that we'll discuss about the decision making statement. In that we have three different types of decision making statement, but before that we will check the condition only. Okay, so I will give one scenario, just find out whether it is a true or whether it is a false right now. So we'll remove this. So here I will give some numbers. Just understand. Here I'm declaring a variable var1 equals to, assume that 19, var2 equals to something 34, var3 equals to something 60, var4 equals to something. So here I'm declaring four different variables. Okay, here I will use 14. So these are the four variables I declared. Okay, now I want to test the conditions only. I will create the conditions. We'll check out, and in that section, in the decision making segment, majorly we are using a relational operator and logical operator. Make a note of that. Here I will create one note for you. First note one, make a note of that. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है. First note one, if you or any user, okay, make a note of that, if you or any user wants to test slash evaluate one condition, then we can use relational operator. Note of that is the most important statement using while learning decision making statement. If you want to test one condition, only one condition, test or evaluate one condition, then we can use a relational operator. We all know that relational operators. Here I will list out some relational operator. Less than equals to, greater than equals to, and not equals to. Okay. So these are the what relational. These are the relational examples. Let's take one example. For example, if you want to check the smaller condition, then what should I do? I will use var1, and here I will use less than, or you can use a less than equals, whatever it may be. Here I'm using a var2. Just specify on the answer whether it is a true or whether it is a false. var1 is a less than var2. What will be the value of var1? 19. And what will be the value of var2? 34. So answer is true or false? True. 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 Answer is true. Great. Similarly, here we'll check. var2 equals to var4. Is it true or false? False. False. We get the value as False. that means you get the idea. So right now I'm testing only one condition. Here is only one condition. Here is also only one condition. What happen if you want to find out the smaller number among these four numbers? That means in that case you need to understand second scenario. Okay, this one is a note one. So in that section only what we can test only one condition at a time. Okay. Similarly, if you want to test two or more condition, then what should we do? So here we took another example. Here in this case we are using same variables. So here I'm using another condition. So here is my note 2.
if you see Infosys में ये question हर बार पूछा जाता है, we can say that persistent company is there and that the aptitude test is there, technical round is there. Among that they will ask about the any programming language, whether you know whether you know what we say, whether you learn about a C language, C plus, what choose any one language. Either you can choose C language, C plus plus, Java, and any other programming language like a Python. And among that they will ask the questions. So in that case, if you choose the C language, they will ask such a type of condition. What happen if you want to test two or more condition? So we need to specify the answer. In that case, we need to specify the answer as if you want to test the two or more condition, then we will use a logical operator along with relational operator. So if you want to test slash evaluate to make a note of that two or more condition, make a note of that two or more condition, then we can use logical ये नोट अच्छे से लिखते जाओ. What are the logical operators are there? Double and, phrase and, double and, logical and, double or, and not or. So these are the logical operators where we need to use. Okay, let's take one example. Now, if you want to find out a smaller number among these four numbers, we have var1, we have var2, we have var3, we have var. What should we do? So here I will write a condition. So make a note of that. See, var1 is lesser than var2. This one is my first condition. Here I will use a logical and. Again I will use another condition. var1 is a lesser than var2. var3. Here I will use one more statement. var1 is lesser than. If we get this all condition true, then definitely we can say that the given number is smaller than sorry, var1 is smaller than var2, var3 and var. Okay, so make a note of that. Here I'm using one condition, two condition and three conditions. Similarly, if you want to test two or more condition, in that case, see I'm using a logical and, means in that case we need to use logical operator. Make a note of. Okay, so the final output we get as false. How we get the false? What is the reason? Because var1 value is lesser than var2, var1 is well lesser than var3, but var1 is not lesser than var4. So that's why in AND operator we all know that if all is a true, then the final output we get as a true. The first statement was a true, second statement was a true, third statement was a false. So in that case, the whole statement will be false. It means var1 is not smaller than 2, 3 and so understand this concept. So these two operators majorly we can use in a relational. Majorly means major. The rest of other operator we can also use. For example, we'll check that. So if you want to find out even number, odd number, like that stuff, we'll discuss about that. In that case, we can use also bitwise operator. Arithmetic operators also we can use like that. So these are the major issues. Now we'll discuss about the what are the types of operators are. So decision statements are available. We'll discuss about that. See the types of statements, decision making statements. Okay. So in that case, majorly we can focus on the if statement, if else statement, if else if statement, and nested statement. So these are the four different statements are used in the decision making statement. Okay, let's do one by one. First we'll check for the if statement. Okay, make a note of that. If is a keyword. If is a keyword. That means it is a reserved word by the system to perform some operation. That means if you want to test one condition, make a note of that. If you want to test one condition, then we will use if statement. Okay, then we will use if statement. If any statement consists of Boolean expression followed by one or more statement. Okay, syntax we'll discuss about that. The syntax of if statement in C programming language is
So here is the syntax. Here we need to write if. Here we need to write if, round bracket. Here we need to write a Boolean expression. Boolean expression means not relational operator or logical operator. That term called as a Boolean expression. Okay. So in that case, here I am using a curly brace open and curly brace close. If this statement is true, then this statement will be executed. Okay. For example, A is a lesser than B, and want to state one statement A is a smaller than B. So if this statement is a true Boolean expression, that means either true or either false. If it is a true, then this block will be executed. If it is a false, then this block will not execute. Make a note of it. Okay. So let's do the practical. So we will more idea regarding that. We'll discuss about the if statement. We'll do some different types of programming also. For example, if you want to find out some smaller number, bigger number, equal to number, like that stuff, we'll discuss about that. My program. First of all, we need to save our program. Please save it. Name was forgotten. So here if and if dot c. Program name is if dot c. So here I will write header files first of all. Standard input output dot h. Second one hash console input output h. Afterwards, I will use void main. We all know that here we need to declare the variables. Here I am declaring int 1, comma 2, two variables. Okay. Why we require two variables? Because we need to accept the value from user. So CLRSC. Here the screen. After the word, I will write one statement to accept the value from user. The value is will be entered, we need to scan that by using scanf for first value, %d for second value, and the values will be stored in address of var1. Second value will be stored in an address of done. Afterward, we will use get ch. That means the user's value accept curly. I will do the operation. So before that, we'll save it. What time? Program is it? Let's try to compile it. Yes, there is no error. Now afterwards, I will use if. See, whenever we use a keyword, the keywords are always represented in white color. See, void is keyword, int is a keyword, if is a keyword. So ये keyword जो भी होते हैं ना, ये पूरे white color में if. Round bracket open close. See, here I will write var1 is lesser than var2. ये स्टेटमेंट जो है ना, ये ना आइदर ट्रू होगा आइदर फॉल्स होगा. इफ इट इज अ ट्रू, देन दिस कर्ली ब्रेस ओपन एंड दिस कर्ली ब्रेस क्लोज विल बी एग्जीक्यूटेड. दैट मींस इसके अंदर जो भी लिखा है ना, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. If the statement is a false, then that statement is not executed. Make a note of that. See, here I will write statement. Here I will write var1 is smaller than 2. This statement will be printed. This statement will be printed when if this condition is true. Right now, assume that the var1 value is at 10 and var1 is at 10 and var2 is at 20. If this statement is a true, assume that, then and then we get the output as a var1 is smaller than 5. Let's check out and save it. Trying to compile it. See, here I will use 10 and 20. First, the var1 value is a 10 and second var2 value is a 20. See, we get the value var1 is smaller than var. Now, trying to use one more time. Here I'm using a 4 and 12. First value is a 4 and second value is a 12. See, var1 is smaller than var2. Now, whenever we trying to execute another type, 20 and 10.
Right now, var1 is a not smaller than var2. So did we get the output? No, we did not get any output. See, we did not get. What is the reason? Because we didn't write a code for that. We write a code for what? If number is smaller, then we need to print. Okay. See, we'll start the sequential execution, so we get the idea. So from keyboard, we need to press F7. Okay. Keyboard पे से F7 press करना है. Let's check out F7. See, now cursor is in wide main. अभी cursor पे ध्यान देना है. Just concentrate on this cursor. ये cursor दिखाई देगा. First of all, whenever we press the F7, okay, ये wide main पे आता है. Later on, see, variables are declared. Now we need to initialize it. We need to display the messages. We need to scan. So that we need to enter the values. अब F7 press करते रहना. Here I will use 10 and 20. अब first value है 10 and second value is a 20. Okay, the var1 contain 10 and var2 contain 20. See, cursor कहाँ जाता है? If again press the value 10 is lesser than 20 true, तो ये cursor अंदर जाएगा. See, अंदर फिर प्रिंट करके बाहर आ गया. ओके, सिमिलरली हम फिर से रन करेंगे, बट यहाँ ना आप बिगर वैल्यू लेंगे. Here I will use 20 and 10. Now check if value var1 is lesser than value var2, the answer is false. तो इसके अंदर जाता है क्या? देखो ये कर्सर के अंदर जाता है क्या? See, नहीं, डायरेक्टली गेट सीएच पे आएगा. That means if your condition is a true, then and then it will be executed. If your condition is true and if you get the value as 1, then and then that statement will be executed. Otherwise that statement will not execute. इसीलिए हमें आउटपुट नहीं मिल रहा. इसलिए हमें आउटपुट नहीं मिल रहा था. Okay. So here we write smaller code for that. If var2 is a lesser than var1, statement var2 is smaller than var. Let's check out, compile it. After that we'll check for 7. So now 20 and 10, we get the second. var2 is smaller than, var2 is smaller than. Check out by using a F7. Okay. I'm audible to all. Is it I'm audible to all? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Is it I am audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Abhijit? Yes, sir. You are Abhijit? Hello. Hello. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. Gaurav says that yes. So this is about the Boolean expression. Let's check out for this statement. Okay, now we'll execute for F7. See, first of all we'll scan this value. Here we'll enter 20 and 10. Okay, now check out the 10 is lesser than 20, false statement. Okay, ये statement false होगा तो इसके अंदर जाएगा कि नहीं? ये directly next if statement पे जाएगा. So if 20 is lesser than 10, yes, true, then it will be executed. So like that stuff ये ऐसे execute होता है. आपको इस पे
कुछ query है तो let me know about that. We'll discuss this. Let's see, this statement is executed. So make a note of that. ये statement कब execute होगा? If the statement is true, then and then it will be executed. Otherwise, नहीं. Here I will use 20 and 4. See, value is smaller than. So this is about the if statement. Note of that. ये आपका if statement and here is a program. Write a C program to find out smaller number, two numbers. This one is a question and this one is a solution. Okay. So ये question है और ये आपका solution है. ये आपको program करके मुझे भेजना है. Okay. So as it is जो मैंने बताया है वही program को as it is perform करना है. You need to perform that practical and afterwards you need to send it on programming book. Okay. Second important thing, similarly, if you want to find out the bigger number, this one is a smaller, this one is a bigger. Okay, here. Now, just we need to change the symbols. Here we need to change the symbols. Instead of less than, we need to write greater than. Instead of less than, we need to write greater than. Here we need to change the smaller as bigger because it is a texture only, just bigger. Here we need to write bigger. Just check out, compile it, execute it. Here I am using a 20 and 10. So first statement will be var1 is bigger than var2. Okay, so run it. First value is smaller and second value is bigger. See, var2 is bigger than. Statements are same, just we need to change the relational. Make a note of that while doing the programming, or just I will give some values and show me what happen if we enter these values. Okay, just I want to enter. When I enter 10 and 10, then which statement will be executed? 0. If you enter both the values, then which statement will be executed? The statement will not executed. What is the reason behind it? Because see, whenever we enter same value at that case, the value must be lesser than or value must be bigger than another. But right now when we enter at 10 and 10, in that case, okay, in that case, the output will not be executed. For that, here will write one more statement. ऐसे केस में हम एक स्टेटमेंट और लिख देंगे if var1 equals to var2. अगर ऐसी केस आती है दोनों नंबर सेम आते हैं, just write it one statement simple. var1 equal to var2. Just we need to write this statement inside the double quote. Let's check out, compile it, trying to execute it. Now enter same values and enter. See, var1 is equals to var. So ये जो होता है ना, ये business logic है. This one is your business logic. Whenever we write this business logic inside this decision making statement, we need to think about that. Okay, whenever we write any program, before writing a program, we need to understand the core concept of any programming. So for example, if you want to find out the smallest number, we need to think on that. I will find out the smallest number. What happen if both numbers are having the same value? What happen? क्या होगा इस? Whenever I use if statement, when I will use if else, when I will use if else, कब मुझे use करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? Just we need to think on that. And whenever we think about that, then we will get the idea. And company wants a business logic, not a rata master. Rata master नहीं चाहिए company को. Company wants a purely business logic oriented students. And for that, C language is a very beneficial language for it. Okay, so let's do one more program. In that, here discuss about that. We'll find out
पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर. ओके, सो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इफ टू लिखता हूँ मैं. जस्ट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट प्रोग्राम नेम, सो यू विल गेट आइडिया एंड जस्ट मुझे डिस्कस करो कि क्या हो सकता है इसमें. ओके, सो एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ, राइट प्रोग्राम, find out positive and negative number. So this one is my question. You need to write a code for it. We all know that what is a positive number, what is a negative number. Just let me know how I'll do the programming. Okay, unmute yourself and let's discuss about that. After that, we'll write a code for that. No, don't worry. If you don't know, let me know. If you don't know about that, but just think it. What are the positive numbers? Just list out the positive numbers. Does anyone know the positive numbers? Can you specify one single number which is a positive? Unmute yourself. Yes, sir. Chavan say yes, sir. Chavan, enter some positive number in text box or chat box में enter करके मुझे बताओ. What are the positive numbers? Give me one example. Quickly. 1, Give me one example. Give me. Positive. Yeah. Just 1 minute. The battery is low. Yeah, good. From Ajay. Just yeah. Positive. One said that one is a positive, right? One number is a positive number. How will I identify the positive number and negative number? Let's discuss. So 1 is a positive, 10 is positive, 15 is a positive, okay, 80 is positive. Can we say that these are the positive numbers? Yes, these are the positive. Let's discuss about the negative numbers. Negative number, that means the number containing minus symbol. Minus 12, minus 99, minus 34, like that. These are the numbers. So you see the plus symbols called as a positive number, the minus symbol called as a negative number. So for that, for that we have some positive and some negative numbers. Okay, so just let me know about that कि how will find out the positive number, कैसे कैसे पता चलेगा these are the positive numbers and these are the negative numbers. Does anyone know that? So this is your business logic. If you know that, then you can write code for that. So assume that these positive and negative numbers will contain one variable called as a var. Okay. So here is a var. So that var contains some positive number or some negative numbers. Then how will treat this one is a positive number? Depend on sign. Good. Depend on sign. But how will consider this one is a positive number? Can I say that? Can I say that if any number greater than 0 is called as positive? Can I say that? Can I say that? Yes or no? Any number which is greater than 0 called as a positive number. Yes or no? Unmute yourself. yes, sir. Yes, we can say that the positive number is always greater than 0. Similarly, for negative number, can I able to write one relational condition? Can I say that number is lesser than 0? Number is lesser than 0 called as a negative number. Can I say that? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
So this is your business logic. Just आपके सामने logic खड़ा है. आप just we need to write a code for that. I will write a code. Just I will write hash include standard input output dot h hash include. Think on that. Just console input output dot h. void में और एक condition रहेगी. एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो कि क्या होगा उस केस में. So here I am declaring one variable int num. वेरिएबल का नाम है कुछ भी ले सकते हैं. I will enter one number. आपके सामने जो लॉजिक खड़ा है वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ. enter one. We need to scan that number. आपको एक ही नंबर चेक करना है इसीलिए मैंने एक नंबर लिया है. Variable will be stored in address. Scan. Now write I will write a condition if num is lesser than greater than any num means जो भी वैल्यू एंटर की है वो is greater than 0 इसमें जो condition then curly brace open close. Make a note of that while writing a decision making statement. These curly braces are important. In that if this condition is true then write print even number is positive. This will be printed on output screen. Okay. If this condition is satisfied. Another condition negative के लिए भी लिखना पड़ेगा. If num1 is lesser than 0. lesser है. ये आपके सामने जो condition है ना वही लिखो. This one is a business logic. Even number is even number is negative. So let's check out. Here we need to write one statement get ch which is used to pull the output screen. I need check out whether we get any error mode. Before that, just save it. Enter one number 10. That is positive or negative? Positive. Yeah. What will be output we get? The given number is positive. Is it true? Yes. Yes. Now we'll check for negative number. Minus 11. Is it positive or negative? Negative. Negative, sir. So what output will get? The given number is See, कोड करने से पहले मैंने बिजनेस लॉजिक कैसे जनरेट किया ये इम्पोर्टेंट है. आपको प्रोग्राम याद रखना या वी कैन से दैट एग्जाम में जस्ट टेंशन है लाइक दैट मुझे ये प्रोग्राम आ सकता है तो मैं इसे मार लो. ये नहीं करना है कभी. While doing any programming, first of all, find out its business logic. क्या प्रोग्राम में क्या लिखा है और मैं कैसे रफ वर्क करके बिजनेस लॉजिक फाइंड आउट करें. आफ्टरवर्ड्स जैसे मैंने बिजनेस लॉजिक लिखा मुझे प्रोग्राम लेने के लिए कुछ लिखने के लिए कुछ दिक्कत हुआ क्या? नहीं. मेरे आपने सामने है मैंने ये बाकी तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस बिजनेस लॉजिक इज इम्पोर्टेंट. ये जो आपके सामने दिख रहा है ना ये बिजनेस लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें यही आपको जॉब मिलेगा. अब इसमें और एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? सी if we enter 0 then 0 is a positive number or negative number. What output we get? We did not get any output. See हमें आउटपुट नहीं मिलेगा. What is the reason? Because 0 को हम कंसिडर नहीं करते. पॉजिटिव में ही कंसिडर करते बट यहाँ नहीं मेंशन करते हैं हम इसे और ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड है. Okay. See when we use 0 is a greater than equals to then we get the output. ये दोनों आउटपुट मिल जाएंगे हमें. यहाँ भी मैंने 0 इक्वल्स टू लिखा लेस देन इक्वल्स टू यहाँ भी लिखा मैंने सेव किया. सो सी वी गेट डुअल आउटपुट. दो बार आउटपुट मिलेगा. सी गिवन नंबर इज पॉजिटिव गिवन नंबर इज we need to write one more code
ये कंप्लीट प्रोग्राम हुआ क्या नहीं हुआ। सो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये ऐसे कैसे करते हो, मतलब क्या बिजनेस लॉजिक लगाते हो। सो हियर इन द स्टार्टिंग में या एंड में व्हाट इट में बी, कहाँ भी रख दो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इफ num equals to 0 equals to दो बार लिखना पड़ेगा, make a note of that because we are using a relational operator. Okay, if given number equals to 0, not only single equals to, make a note of that, equals to के लिए double sign use किया जाता है। So here I will write statement print in that section the given number is 0, given number is 0. So we cannot say that whether it is a positive or whether it is a negative. Okay, file it. Now this program is complete. Now I will enter 10. The given number is positive. Towards I will enter 0. See, the given number is 0. So this is a complete program. ये complete program है to find out आपके expression के हिसाब से to find out whether the given number is a positive. Did you get that concept? हमने स्मॉलर Yes, का sir. प्रोग्राम देखा, हमने गेटेस्ट का नंबर देखा, अभी हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव देख रहे हैं। ऐसे ये सभी प्रोग्राम है इफ से ही देख रहे हैं। Okay, ये इफ स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है आपको, ये इफ से ही देख रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वी विल राइट वन मोर प्रोग्राम। ओके, और एक प्रोग्राम लिखेंगे जिससे हमारा बिजनेस लॉजिक और बढ़ेगा, बट मेक अ नोट ऑफ दैट ये प्रोग्राम आपको आज ही कंप्लीट करना है और जस्ट यू नीड टू अपडेट इट ऑन ग्रुप। सो हियर आई विल राइट a program to find out whether given, we can find out valid voter. Just you need to find out, we need to write a code for that. Just आपको ये code लिखना है कि whether the given number or whether the given person, okay, we can say that person, write a program to find out the given person is a valid voter or not. Voter पता है ना आपको, वोट किया होगा या समथिंग, आपके पेरेंट्स ने कभी वोट किया होगा इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शन। एमएलएम इलेक्शन इज देयर, एमपी इलेक्शन इज देयर, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पंचायत समिति, लाइक दैट स्टफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शंस आर देयर एंड इन दैट इलेक्शन देयर आर सम सर्टेन कंडीशंस who can vote. Okay, a normal student, a normal guy, which the smaller kid, we can say that a kid is not permitted to vote, give a vote. Okay, like that stuff. So आप मुझे इसका बिजनेस लॉजिक बता के कौन कौन वोट कर सकता है कौन नहीं कर सकता। So according to that we need to write a code. First of all we need to like our BL. BL stands for business logic. ये आपको आना चाहिए। You need to solve by using a if condition. So let me know about that some conditions of voter. Does anyone know about that? If you want to create one smaller application to find out whether the given person is a valid voter or not, I will find out that. Sir, 18 plus person. Yeah. So we need to find condition as age. We need to find the condition as age. So 18 plus. If your age is 18 plus, then that means what? If your age 18 or greater than 18, make a note of that. If your age is 18 or greater than 18, then and then you can able to vote the. So age is greater than, and here I want to use equals to. If we use only greater than symbol, that means if you are a 19, then you can vote. ओके, सो ऐसा मीनिंग होता है इसका। और यहाँ हम इक्वल टू डाल देंगे तो 18 के ऊपर एक दिन भी हुआ तो ये वोट कर सकते। इफ योर एज इज 18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, देन द वैलिड। अभी ये बिजनेस लॉजिक मैंने लिखा है, मुझे इतना ही याद है। सो लेट्स ट्राई टू राइट अ कोड। अब हम कोड लिखेंगे और जो जो प्रॉब्लम आएंगे ना उस पर सोल्यूशन फाइंड आउट करके चलेंगे। ओके, different types of problem will come. Okay, for example, if your age is a minus, then what happen? So like that stuff. So let's do that.
So here we'll declare one variable int age. Age लगेगा हमें clr scr screen, and after that we'll send one statement printf enter your age. After that we'll scan that age. What is the age? Age is a variable. Okay, make a note of that. Variable के बारे में हमने पढ़ लिया है, कुछ भी ले सकते हैं according to rules and regulations. The value will be stored in right now. Yes. So now if age is just here I'm using only age is greater than 18 only. Okay, equal to नहीं use कर रहा हूँ मैं, और उसके अंदर की problem भी देखेंगे. Okay. So here I will write printf. Or valid. Yes, we need to write a string valid. That's it, and after that we'll write the get ch which is used to let's start. So for using that I will save it. Here I will use if 3. If 4 if 3 to 6. Okay. So just compile it, check whether did we have any code inside it. Execute it. So right now my age is 19. So is it valid voter? Yes, valid voter. Okay. So if my age is a 45, okay, 45. Is it valid voter? Yes, you are a valid voter. Okay. What happen if we enter only 18? You are not valid voter. See, we did not get any message. So what is the reason behind that? Because यहाँ equal to का symbol देने भूल गए. Now we'll save it. And now we're trying to execute it. Okay. See, we get that valid. समझ में आ रहा है? So like that. अब क्या होगा कि ठीक है, हमने पॉजिटिव का लिख दिया, अब मैंने -11 मेरी एज लिख दी. Does we have a valid voter? -11. कोई माइनस में एज होती है क्या? नहीं. So we need to write a code for that. अब ये प्रॉब्लम है आपके सामने ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि अरे गलती से अगर यूजर ने वैलिड माइनस एज एंटर कर सकता है, यूजर अभी एंड यूजर बहुत क्या कहते हैं उसे, होशियार होता है, लाइक दैट मीन्स ब्रेव, व्हाट वी से, थोड़ा सा चालाक भी होता है. सो व्हाट हैपन इफ एनी यूजर एंटर्स अ नेगेटिव इमेज, नेगेटिव एज, सो व्हाट विल वी डू? सो वी नीड टू राइट कोड फॉर दैट. सो ऐसे भी हो सकता है कि गलती से कोई लिख सकता है. सो फॉर दैट हियर वी राइट इफ age is lesser than 0. If age is lesser than 0, then here we give a suggestion. Please enter valid. So we can say that ये आप enter कर लो valid age, तो ये आपको दिखाई देगा. Otherwise software will show an error. Okay, or we can also say that here let's execute it. -11 age लिखा मैंने. Error, please enter valid age. फिर से मैं रन कर रहा हूँ इसे, यहाँ मैं देता हूँ -54 age. See, error, please enter. अब ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, अभी तक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ. व्हाट हैपन अगर कोई किसी ने 1 2 3 4, हाउ वी कैन से दैट 0 एंटर कर दिया. 0 is a positive number, so we need to write a code for that. Here again we need to write a code for that. If age equals to 0, अगर ये किसी ने एंटर किया, जीरो एज मतलब हो सकता है ना, हम ईयर में कंसिडर कर रहे हैं, कोई 6 मंथ का बच्चा है या वी कैन से दैट 8 मंथ का है, वो एंटर कर रहा है. सो वी नीड टू स्पेसिफाई दैट.
you are valid. क्यों वैलिड बेटर नहीं है? क्या रीजन है? बिकॉज एज का प्रॉब्लम है। ओके, अगर जीरो है तो कंसिडर नहीं किया जाता, और भी से इनवैलिड भी नहीं कर सकते हम। ओके, इनवैलिड क्यों नहीं कह सकते? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज 6 मंथ 8 मंथ हो सकता है। सो अगर किसी गलती से किसी ने जीरो एंटर किया तो उसे प्रॉपर दिखना, यू आर नॉट वैलिड, ये मैसेज आना चाहिए। अब गलती से ये भी हो सकता है कि मैं लेस देन 18 एंड ग्रेटर देन जीरो एंटर कर दूं, फॉर एग्जांपल माय एज इज 6, इसके लिए तो कुछ मैसेज नहीं जा रहा, तो ये भी गलती है मेरी। तो ये इम्प्रूव करते जाना है आपको। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम एक ही झटके में से स्टार्टिंग से बॉटम तक पूरा एक ही याद आए, ऐसा कभी होता नहीं है। जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट सम एरर्स एंड वी नीड टू रिजॉल्व दैट, ऐसे ही प्रोग्रामिंग होता है। सो इफ हियर आई वुड राइट इफ एज is greater than 0, अगर 0 से ऊपर है, and here we'll use logical and if age is less than equals to 18, के अंदर एंड एज के अंदर है, और यहाँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर मुझे यूज करना है। क्यों करना है? बिकॉज मुझे 18 के ऊपर डिफरेंट कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है और 18 के बाद में डिफरेंट कंडीशन यूज करनी है। हियर आई विल राइट प्रिंटर यू वैलिड ऑर्डर नहीं है। क्यों? बिकॉज आपकी एज 0 से ऊपर है एंड लेस देन 18 है। अगर ये आपको स्टेटमेंट रिमूव करना है तो ये कर सकते हो, ये स्टेटमेंट रिमूव करना है तो कर सकते हैं। जस्ट हियर वी नीड टू ऐड वन स्टेटमेंट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू डालना पड़ेगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू डालना मतलब 0 के ऊपर है और लेस देन 18 है, तो ये रिमूव किया तो भी चलता है, या उसे भी रहना है और इसे भी रहने देना है, तो एज इट इज ऐसे रहने दे सकते। सो लेट्स कंपाइल इट, save it, and trying to execute that code. See, now my age is a 2. See, you are not valid voter. Valid voter नहीं है। 11, you are not valid voter. -11, error, please enter valid age. अब मैं एंटर करता हूँ एकदम वैलिड, फॉर एग्जांपल 90। अभी भी कंप्लीट प्रोग्राम है क्या? मेरे हिसाब से अभी भी कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, इसके अंदर और एक डिफेक्ट है। ओके, सो वी नीड टू रिजॉल्व दैट डिफेक्ट। इफ यूजर एंटर्स 400, अभी एज कभी होता है कि 400 मैक्सिमम मैंने जितना सुना है 110 तक है भाई, 110 तक एज हो सकता है। ओके, सो स्टिल ही इज वैलिड वोटर, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। सो फॉर एग्जांपल किसी की एज 800 साल है या 8000 साल है, वो भी वैलिड वोटर है। सो इतनी एज तो नहीं होती है, दैट मीन्स वी नीड टू राइट अ कोड। सो वो कहाँ लिखेंगे? वैलिड वोटर के अंदर ही हम एक एंड डाल के लिख सकते हैं। सो मैक्सिमम इट वुड बी 110, मैंने जितने सुना है, या वी कैन से दैट 120 चवान जैसे कह रहा है। सो विल ऐड वन स्टेटमेंट, हियर वी ऐड द लॉजिकल एंड एज इज लेसर देन इक्वल टू 120। अगर 18 से ऊपर है और 120 के अंदर है तो ही उसे वैलिड कंसिडर किया जाए, ऊपर का जो है उसे वैलिड मत करो। Okay, ये तो लेसर का हो गया। अगर ग्रेटर आता है तो क्या करना पड़ेगा? सो उसे नॉट वैलिड कंसिडर किया जाए। सी, अब राइट नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दैट। सो हियर आई विल यूज 11 111 वैलिड वोटर। One more time I will use 130. Is it valid? No. Is it valid? No. So we need to write a code No. for it. So we need to write a code for that. इसके लिए भी हमें कोड लिखना पड़ेगा। Okay. So यहाँ कोड किसके लिए लिखेंगे हम? ये निगेटिव का जो कोड लिखा था ना, उसके अंदर हम एक कोड और एक ऐड करेंगे, इधर कर देंगे एंड एज इज ग्रेटर देन 120, 120 के ऊपर जब आता है तो प्लीज एंटर वैलिड एज। कंपाइल इट, लेट्स सेव इट, execute it. Now my age is 130. Is it valid? No.
age is 130. Just we need to write one statement for that. एक statement लिखना पड़ेगा. If age is greater than equals to just 120, def double quote error. Now it will work. Save it. There is the expression syntax. Save it. Run it. Just 1 minute. Problem. सर वो प्रिंटफ में मिस्टेक हुआ है. कौन सा? प्रिंटफ स्टेटमेंट में क्या? स्पेलिंग मिस्टेक हुई है. PRITN हो गया सर. My age is 133. Is it valid, guys? No. Error. Please enter. So now we can say that this is a complete application or a program to find out the age. कहाँ से start किया था हमने? Single page से, single line से. अब हम कहाँ तक आ गए? देखो अभी देखते देखते हमने near about 34 lines of code लिखा. 34 lines of code. Okay. So like that ऐसे ही coding होती है और आप ऐसे program कर सकते हो. So if you have any query regarding that, let me know about that. We'll discuss about that. And tomorrow we'll close the decision making step. So right now, does anyone have a query regarding a if statement? No, जितने भी sir. मैंने No, sir. program No, yes sir. here sir. okay great. So I will write one more program. Which one? Yes, to find out the even and odd numbers. एक वो एक program देखते हैं और याद रखेंगे smaller number, bigger number, positive, voter and even or odd. ये 5 प्रोग्राम हमें if से भी करने हैं, if else से भी करने हैं and if else if से भी करने हैं. Okay. So आज हम एक last program देखते हैं. Afterwards we'll close the session. And tomorrow we'll discuss about the if else and if else if. ये दोनों के बारे में डिस्कशन करके हम tomorrow close कर देंगे decision making starter. And right now Monday को नहीं है, Tuesday को भी नहीं चलेगा. ओके जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं बताता हूँ बिकॉज अभी ये सेशंस जल्दी लेने पड़ेंगे हमें. इसके बाद में हमारा लूप्स है, फिर एरे है, स्ट्रक्चरिंग ये अबाउट 40 to 45% हमने कंप्लीट कर लिया. ओके बट ये पूरा का पूरा हमें कंप्लीट करना है. सो लेट्स डू वन मोर प्रोग्राम जिसके अंदर हम इवन नंबर एंड ऑड नंबर लिखते हैं. बिजनेस लॉजिक लिखते हैं पहले. राइट I will share the MCQs share कर दूंगा. And after that before that I will share the notes also. So notes भी share करता हूँ मैं. I think एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं MCQ टाइप में.
So C, is there any from B division and C division? बी और सी डिवीजन से कोई है क्या उनके पास? लास्ट टाइम आपका एग्जाम एमसीक्यू ही हुआ था ना? Yes, sir. Yes, sir. या एमसीक्यू होते हैं ना, आई विल शेयर दैट एमसीक्यू, डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स क्वाइट इजी, हार्डर नहीं रहते। बट ये समझ लो, ये एमसीक्यू एग्जाम देना ये अलग बात है, और ये बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करना ये अलग बात है। So don't worry about that. Even though are from B division and C division, I taught the C language. Basically, जो भी C language था मैंने पढ़ाया था उनको, afterward I left the college. So complete नहीं कर पाया उस time पे. The madams are there. They taught the subject. But don't worry about that. So अभी join करके आप अपना business logic improve कर सकते हैं. If you have any query regarding the C language, let me know about that. We'll discuss and we'll resolve. So write a C program to find out even and odd number. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? even and odd number मुझे फाइंड आउट करना है. we need to write a code for that. Just give me 1 minute. We'll write a code for that. Write a C program to find out whether the given number is even and odd. Okay. So this is my question. Now we need to write a, first of all, business logic, BL. What is a positive number and what is a negative number? Sorry, what is a even number and what is a odd number? Can I say that even? Even number. Can I say that 1 is even? 3 is even? 5 is even? Yes or no? No. These are the odd numbers. Can I say that 2, 4, 6, 8, 10? One These is are the odd, sir. these are the even numbers. Yes, sir. And what about odd numbers? See. 1. So business logic क्या मिलेगा मुझे? कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा? मुझे एक तो नंबर लिखना चाहिए, like 1, 3, 5, 7, 9, like that. These are the odd numbers and these are the even numbers. So क्या business logic आ सकता है कि मुझे इससे फाइंड आउट करना है कि even है या odd आ रहा है? We need to write code for that. Okay. So The कैसे number करना? divided by 2. Number Divided by 2. number divided by 2, wrong answer. Okay, for example, assume that आपने बोला ही number divided by 10 by 2. I will find out. कैसे पता चलेगा? We get the output as a 5. So if 5 output आने से क्या पता चलेगा आपको whether the given number is even or odd? Odd. Odd, sir. कैसे? 5 आया है आंसर, number is a 10, actual number is a 10. We divide that number 10 by 2. We get the final output as a 5. How we can say that the given number is a even or odd? We get output as odd, the actual number is a even. कैसे पता चलेगा? So instead of that divide, we need to call mod. We need to call that symbol as mod. में mod करना. Okay, so this symbol is a mod. We all know that. ये हमने arithmetic में देखा था. हमने arithmetic में देखा था. इससे क्या होता है mod से? We can calculate the remainder. We all know that. हम क्या calculate करते हैं? Remainder. So इसका remainder क्या आता है? 0. Make a note of that. If any number, here I will write a note. तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा. If any number mod by 2 and we get, if any number mod by 2 we get values, okay, two values, either 1, either 0. Make a note of that. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है.
अगर हम कौन सा भी नंबर मॉड बाई 2 करते हैं, क्या करते हैं, मॉड बाई 2 करते हैं, तो उसका जो रिमाइंडर आने वाला है, मॉड मतलब क्या होता है, परसेंटेज सिंपल, जिससे हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं, और उसका अंदर वी गेट टू वैल्यूज, आइदर आइदर 1 मिलता है या 0। जब आपको 0 मिलता है तो हम उसे इवन नंबर कहते हैं, और जब आपको 1 मिलता है तो उसे ऑड नंबर कहते हैं। तो जस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल आई गॉट अ 10, 10 mod by 2. Okay, what we get output, 0. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 eights are sorry, 2 fours are 8, 2 fives are 10. We get the quotient as a 5 and remainder as a 0. 0 even remainder मिला। चलो another number देखिए, 44, 44 mod by 2, we get 0। मॉड सिंबल है, ये डिवाइड का सिंबल नहीं है, मेक नोट ऑफ दैट। ये सिंबल मॉड का है। मॉड कभी भी रिमाइंडर कैलकुलेट करता है, और कभी भी याद रखना कि अगर इवन नंबर है तो 0 रिमाइंडर मिलेगा, अगर इवन नंबर है तो 0 मिलेगा। चलो ऑड नंबर को चेक करते हैं, 11, 11 मॉड बाई 2। अब 2 5 are 10, 11 में से 10 माइनस हो गए, क्या होगा, 1 आ गया। चलो अनदर नंबर आएंगे, 9 देखेंगे, 9 मॉड बाई 2, 2 4s are 8, 9 में से 8 माइनस होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। दैट मीन्स if we have even number then we get the 0, if we have odd number then we get the 1। ओके, अब यही हमें प्रोग्रामिंग में लिखना है, जस्ट हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, हैश इंक्लूड सोल इनपुट आउटपुट, साइडमैन yes open int num clr cr f enter value of scanf percentage d separation by comma, the value will be stored in address of scan भी कर लिया। right here I will write if num mod by 2 mod by 2 इक्वल्स टू, दो बार इक्वल टू देना है, मेक अ नोट ऑफ दैट, हमें कंपेयर करना है, इसका आउटपुट जो भी आएगा उसको हमने 0 के साथ कंपेयर करना है। और ये किसका लॉजिक है, ये BL ऑफ इवन नंबर, लॉजिक फॉर इवन नंबर। कैसे, फॉर एग्जांपल सी, यही एग्जांपल देखते हैं, 10 मॉड बाई 2, आउटपुट क्या है, 0 आ रहा है। अब ये इसकी जगह क्या हो जाएगा, 10 मॉड बाई 2 है, आउटपुट आ जाएगा 0, 0 इक्वल्स टू 0। इफ इट इज अ ट्रू then we can say that the given number is a even। here we need to write even। अब else के लिए लिखेंगे, अब odd के लिए लिखेंगे, if num mod by, mod का सिंबल याद रखो, परसेंटेज का सिंबल नहीं है, ये परसेंटेज का सिंबल है। ओके, डिवाइड का सिंबल नहीं, डिवाइड के लिए ऐसा सिंबल यूज होता है, mod by 2 इक्वल्स टू 1। अगर ये नंबर 11 है, 11 मॉड बाई 2, आंसर क्या आने वाला है, 1। 1 इज इक्वल्स टू 1, ये ट्रू आता है तो ये क्या होगा, ऑड नंबर। सो ये क्या होगा, BL फॉर ऑड नंबर, BL फॉर, BL मींस बिजनेस लॉजिक। नंबर, चलिए तो हो गया। अगर गलती से किसने 0 एंटर कर दिया तो उसके लिए भी लिख देंगे इफ num इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, इसने लिख दिया। इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं कह सकते ना, सो इसलिए क्या करेंगे, f even number is 0।
ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई माइनस नंबर एंटर कर दे। आप माइनस को इवन और कैसे कहेंगे ना। सो फॉरगेट अबाउट दैट। नहीं है तो नहीं लिखना है तो लिख सकते हैं। इफ यहाँ कोड लिखना है, इफ नम इज ग्रेटर देन सॉरी लेसर देन 0, स्टेटमेंट ऐड कर देंगे। printf प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर। रिक्वेस्ट कर देते हैं हम एंड यूजर को। completed। here I will write get ch। कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें, ओनली bl याद रखना है। ओके सो यहाँ इक्वल टू इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर मॉड बाई 2 इक्वल टू 0। सो इसे दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी और एक bl बताता हूँ इसका मैं, num mod by 2 is not equals to 1। नॉट इक्वल टू सिंबल है, आउटपुट क्या आने वाला है, 0 है। 0 है तो नॉट इक्वल टू कर दो, 0 नॉट इक्वल टू 1 2 आ जाएगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये भी हम बिजनेस लॉजिक यूज कर सकते हैं और इसके लिए हम ये अलग यूज कर सकते हैं, num mod by 2 is not equal to 0। तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या यूज करना है। ये इसकी जगह ये भी लिख दिया तो भी चलेगा। okay, उसका मीनिंग ये की है। सो कंपाइल इट एंड रन इट। अब एंटर करते हैं यहाँ वैल्यू, वन एरर इज देयर। प्रिंटअप का स्पेलिंग कहाँ तो ये गलत हो गया है, जस्ट चेक। या no error executed। So first of all start with 0। see the given number is a even, यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। so इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आके टॉप पे डालना पड़ेगा इसको, इस स्टेटमेंट को। 0 होगा तो वो पहले ही बता देगा। ये चेंजेस आपको करना पड़ेगा, यहाँ से ये स्टेटमेंट निकालना। ये ट्रायल एंड एरर बेस पे ही होता है, जैसे जैसे आप करते हो तो उसके हिसाब से आपको रन करना पड़ता है। सेव इट नाउ, रन इट। लेट्स स्टार्ट विद 0। सी गिवन नंबर इज 0, द गिवन नंबर इज वन। प्रॉब्लम फिर से आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। डिवीजन ही नहीं हो पाएंगे ना। num equals to 0 0 equals to 0। if num equals to 0 तो ये बराबर रन हो रहा है। अब ओके यहाँ मैंने एक एडिशनल कंडीशन में देखी, नम इज नॉट इक्वल टू 0। नम ना इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ओके सो ये कंडीशन रिकॉर्ड करने के बाद में, रिमूव करने के बाद में यहाँ 0 आ रहा था, अब ओके है। सो अब 0 आता है तो सी गिवन नंबर इज 0। सो लेट्स ट्राई अनदर नंबर, given number is even। let's try another number 8 6, the given number is even। let's another number odd number 3, the given number is odd। let's try another number 11, the given number is odd। so let's try another minus number -11। see error, please enter valid enter positive number। so ये complete program हो गया। अभी तो आपने क्या सीखा था, इट इज नॉट सिंपल कोड। ओके जैसे भी आपने अभी सीएससी के स्टूडेंट हो गए या वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के स्टूडेंट हो गए, उन्होंने अभी प्रोग्रामिंग सीपीसी पढ़ा है। सीपीसी के अंदर उन्होंने दो ही कंडीशन डाले होंगे, इफ गिवन नंबर मॉड बाय 2 इक्वल टू 0
and if given number or number mod by 1 mod by 2 equal to 1 even or odd, but हमने आपने देखा होगा कि हमने कितने कंडीशंस ऐड करे. Okay, so like that you need to perform the practicals. अब ऐसे practical आपको करना है. Okay, so this is the overall about today's lecture. So we'll close the today's lecture. Just 1 minute. So before that, if you have any query, let me know about that. We'll discuss about that and we'll close the session. Only few students are joined. Why? Rajguru, Kushi, Chavan, Ajay, Aniket. Chavan, तुझ्या डिव्हिजन मध्ये किती आहेत स्टुडंट यामधले? यस सर. आपकी डिवीजन में से कितने स्टूडेंट है? सर हमारे डिवीजन में टोटल 24 स्टूडेंट है. राइट नाउ आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे